I hope are you able to see the screen properly? Screen is okay. So today we are going to see this terpenoids. Particularly, we'll try to finish this terpenoids. Again, इसमें से कम एक या दो क्वेश्चंस आते हैं and this part is again important. So there are a lot of drugs in the pharmacognosy, but at least you should know few important points. Okay? There are a lot of drugs you see. Okay? Again, they have also included herbal drug technology in your chapter in your syllabus, but they are only going to ask you 10 questions from pharmacognosy. For that 10 questions, you have to study a lot of things. So next part is nothing but these terpenoids. After that, we will see volatile oils, and then later on we will see resin. So I have changed my plan. I am going to complete your pharmacognosy first, and then we'll see the remaining topics from engineering, and then we'll start physical. So terpenoids. So what do you mean by terpene or terpenoids? Again, you should know the definition. As such, they used to ask you the questions. We have seen the different we have seen the different secondary metabolites of the plant. So terpenes are also again a secondary metabolite of plant. Terpenes भी क्या है? It is a kind of secondary metabolite of the plant. Like your alkaloids, glycosides, so they are also a secondary metabolites of plant. Likewise, that again one type of secondary metabolite of plant is nothing but terpene. But they are hydrocarbons. What are they? They are the hydrocarbons. Terpenes are the hydrocarbons of the plant origin, and they are the hydrocarbons of plant origin, and they are the either monomer or dimer or trimer or polymer of what the simple hydrocarbon known as a C5H8. C5H8. So terpenes are nothing but the hydrocarbon of plant origin. Their formula is nothing but the C5H8. Carbon 5, hydrogen 8. C5H8. Now this C5H8 is known as a hemiterpene. It is known as a hemiterpene. Okay? It is known as a hemiterpene. C5H8. Only the formula C5H8. It is known as a hemiterpene or isoprene. C5H8. It is known as a hemiterpene or C5. It is known as a C5H8, hemiterpene or isoprene. So you can see तुम्ही आप कह सकते हो कि terpenes क्या है? They are the hydrocarbons of plant origin, and they have normally this formula C5H8 n times. Okay, there might be 2 times C5H8. So here C10 is 16. There might be 3 times C5H8. So that is nothing but the C15 H24 like that. Okay, so C5H8 this formula will be repeated in these terpenes. They are known as a terpene. So first time there was the isolation of one oil known as the turpentine oil from the pine tree. आपने देखा होगा turpentine oil बहुत सारे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जो होते हैं. A lot of Ayurvedic formulation they utilizes mostly turpentine oil. Formulation which are oil-based formulation for external application. Say for example, in case of arthritis, in case of gout, in case of pain and inflammation. So in that type of Ayurvedic oil, they will have turpentine oil. So this turpentine oil was obtained from this pine tree, and first time it was isolated from pine tree, this turpentine oil, and later on it was observed that it is containing C5H8 in it. Now they named the chemical is known as a terpene. Terpene किसको बोलेंगे? Terpene is C5H8 S2N, n times C5H8. Okay, so it may be either C10, H16, C15, H24 extra. So 23 etc. etc. So, then C20, H32. Okay, like that. So we are going to see that so the terpene is the term was given after the isolation of turpentine oil from pine tree, and it is a component of resin. Turpentine produced from a resin. Okay. This turpentine oil as such it is not found in the plant. ये as it is नहीं होता है. So it is a component of resin. प्लांट में क्या होता है? रेजिन होता है और रेजिन का डिस्टिलेशन करके so after the distillation of resin you are going to get this turpentine oil. So they are the derivatives of terpene hydrocarbons. They are known as the plant hydrocarbons C5H8 n times. Okay, now they are also, or you can say they are oxygenated products. They are oxygenated product or they are hydrogenated product or they are dehydrogenated product.
So what do you mean by terpenoids? So terpenoids normally they are the derivatives of terpenes. Okay. So terpene is the original term, but nowadays this terpenoid term is also roughly used to denote the terpenes. Okay. But terpenes and terpenoids they are a little difference. Terpenes मतलब क्या? They are the hydrocarbons of plant origin. C5H8 n times. It might be to one time, two times, three times. Okay. They are known as the terpenes, but their product known as the oxygenated product of terpene or hydrogenated product of this hydrocarbon or dehydrogenated product of this thing. They are known as the terpenoids. Okay. Basically, terpenoids are volatile substances, and because of their presence, a plant will get an aroma, plant will get a smell. They are the responsible for the smell of particular plant. जो भी आपका plant का smell होता है, okay, they are because of the terpenoids. Okay. Okay, so they give the plant fragrance or aroma, and that's why they are known as the essential oils. They are known as the essential oil. Why they are known as essential oil? Because they represent the essence of the plant. तुलसी का एक smell आएगा आपको. If you are smelling a tulsi leaf, you will get a particular type of smell due to eugenol. What is that eugenol? It is a terpenoids. It is a terpenoid. Basically, terpenoids are the volatile substances which give plant aroma. Okay? So the smell or the fragrance or the aroma of the plant is because of the terpenoids, and that's why they are known as the essential oil, as they represent the essence of the plant, and they are also known as ethereal oil. They are also known as ethereal oil. So volatile oil, essential oil, or aroma, or essence, or ethereal oil, all are the synonyms. Okay. Now, terpenes, hydrocarbons, and their component they are okay, terpenes, hydrocarbons, and components of resin. Turpentine is produced from the resin, as यहाँ पे मैंने बोला है कि फर्स्ट टाइम टर्पिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम ए पाइन ट्री जो होता है उससे एक रेजिन आया था और वो रेजिन से आपको टर्पेंटाइन मिला. देन टर्पेनॉइड्स आर नथिंग बट दे आर द पॉलीमर ऑफ आइसोप्रेनिल. क्वेश्चन इसके ऊपर एक बार आ चुका है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आइसोप्रेनिल? और C5H8 इज नोन एज, अभी रिसेंटली जीपीएट में आया था C5H8. देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH CH2, ये क्या है फॉर्मूला? क्या है? C5H8. This formula C5H8 of the plant origin, hydrocarbon of plant origin, is known as isoprene. क्या बोलते हैं इसको? isoprene. एंड ये फॉर्मूला पूछा था एक बार डायरेक्टली ऐसे फॉर्मूला C5H8 from the plant origin is known as, क्या बोलिए उसको? isoprene. isoprene क्वेश्चन एज इट इज आ चुका है. isoprene C5H8 और isoprenaide units अपने टर्म आया हुआ आपको isoprenaide unit. तो that is nothing but C5H8. they are the they are the monomer for terpenoids. Now these terpenoids they are widely distributed in the plant kingdom. They are also present in some caterpillars. Caterpillars होते हैं जो कीड़े होते हैं नाग, उसमें भी कभी कभी आता है. So caterpillars also they emit these terpenes. And देखो अगर आपने कोई ऐसे कीड़े होते हैं, वो कीड़े अगर आपके घर में आ गए ना, आपको एक पर्टिकुलर टाइप का स्मेल आएगा. Why that smell is there? Because they emit terpenes. Okay, they emit the terpenes. So mostly it is found in the plant kingdom, but also distributed in the caterpillars as they emit the terpenes. Terpenoids permanently available in the volatile oil. So volatile oil में ये terpenoids होते हैं, terpene होते हैं. So volatile is made up of terpenes only, right? Now these terpenes may be either linear. ये linear भी हो सकते हैं. C5H8 C10 H16 C है ना, C15 H24. Okay, so these monoterpenes and diterpenes. मोनो मतलब क्या है? मोनोटर्पिन मतलब C. Okay, two isoprene unit. Monoterpene means two isoprene unit. Okay, so two isoprene unit you will get a monoterpene. So monoterpene, diterpene means four isoprene unit. So monoterpenes and diterpenes they are not a volatile in nature. They are like a they behave like a fixed oil. Okay? But hemiterpene, sesquiterpene, and all tetraterpenes are also not a volatile in nature. So we are going to see that. इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है. So remember over here so terpenes are nothing but the hydrocarbons of plant origin. Their formula is C5H8 n times. Okay, it was first time isolated from turpentine oil, a pine tree,
and that's why they are given the terpene. Basically, they are the hydrocarbons of plant, and their oxygenated product, hydrogenated product, dehydrogenated product. ये terpene के hydrogenated, dehydrogenated, oxygenated product जो है उनको अपन बोलेंगे terpenoids. You call them terpenoids. So they are known as essential oil or they are known as ethyl oils. Remember, okay? And the basic unit of terpenoid is nothing but the C5H8, C5H8, which is known as the isoprene. Okay? They are distributed in the plants, also found in some caterpillars, and they are permanently available in the volatile oils. We'll see the next part. Their properties. What are the properties of turpentine, or what are the properties of terpenoids or terpenes? So they are the colorless liquid होता है वो, and they has a specific kind of smell. So colorless pregnant liquid. Okay, they are having less density than water. उनका density कम होता है, lighter than water, and they are volatile in nature. Few of them are solid. A few of them are solid. Solid terpenoids कौन से? For example, camphor. ये terpenes जो होते हैं, they are colorless and they represent the fragrance aroma of the plant. They are having less density than water. They are lighter than water. They are volatile in nature. Some of them are the solid. Most of the time ये जो terpenoids होते हैं, they are liquid in nature. Okay, they are the fragrant liquids. But some of them are solid. For example, camphor. Camphor is solid. They are soluble in the organic solvent, alcohol and mixed oils. Oil में soluble है, alcohol में soluble है ना, organic solvent है, but they are insoluble in the water. Remember, insoluble in the water, and that's why they can be easily extracted by steam distillation. Extracted by steam distillation. They are open or cyclic. Okay, their chain may be either open. अगर open chain है ना, they might be either open chain or they may be having one or more double bonds. Okay, they give addition reaction with the halogen. Okay, hydrogen etc. acid. उनका addition reaction क्या होता है hydrogen से halogen मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, hydrogen and acid, and addition product will have antiseptic property. तो ये terpenes का addition product जो होता है addition of hydrogen or halogen or acids, so it is an antiseptic property, and that's why they are used as a they are also used as a antiseptic. They are also used as a counter reactant. So we are going to see the uses. They undergo polymerization and dehydrogenation. They get easily oxidized nearby all oxidizing agents. ठीक है ना, ठीक है, मी लेक्चर मध्ये घेतो एक 5-10 मिनिटं. ठीक आहे, मी पावणे 8 वाजता किंवा 8:15 वाजता फोन करतो. 8 वाजता लेक्चर आहे आपले, 8 वाजता जॉइन कर. So they give addition reaction with halogen acids, and addition product possess antiseptic properties. They are also counter reactant. They undergo polymerization reaction, dehydrogenation reaction. They easily get oxidized by near about all oxidizing agent. So oxidation भी होता है उनका. And on thermal decomposition, अगर thermal decomposition करेंगे, most of the terpenoids they will give you their monomer. What is their monomer? Isoprene. As one of the product. Isoprene क्या है? Terpenoids का monomer. Terpenoids are either C5H8 in raised to n. N times C5H8 होगी. It may be either 2 times, 3 times, 4 times. Okay. They are optically active. These terpenoids are optically active, and they will become dark in color. Okay, upon standing in air or sunlight. तो ये क्या होता है? Because of the they will have a double bond. Because of the unsaturation. Okay. They are optically active. Okay. They are optically active, and upon sunlight, if sunlight falls on them, okay, if they are kept in a open light, so they will get darkening, open standing or air. If they get decomposed or they get oxidized in presence of air and sunlight, इसका oxidation भी होता है. Volatile oil, that's why they should be stored in the well closed container, airtight container, in a amber colored container. तो you might have seen, अगर आपने क्लोव ऑयल का बॉटल देखा होगा, तो क्लोव ऑयल का बॉटल कहाँ पे, ऐसा एक छोटा बॉटल होता है ना, 10 ml का 20 ml का बॉटल होता है. If you visit in a medical shop, and so they used to dispense in a amber color bottle. Why? Because it is a terpenoid, it will have double bonds, it is a ethereal component, and if it is kept in the open space in the air, or if light get reached to that terpenoids, what will happen? There is oxidation of these things, and they will become a dark in color. Okay, so these are the properties. So at least you should know. यहाँ पे एक बार एक क्वेश्चन पूछा है
what is the isoprene? C5H8 unit is a isoprene unit, and it is a basic unit for terpenoids. So all the terpenoids are they are either having C5H8 or N times, 2 times, 3 times, 4 times, etc. And terpenoids are nothing but their hydrogenation, oxidation, dehydrogenation product of terpenes. Remember, this table is most important. इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. Classification of terpenes. Okay, now these terpenes, they are classified in different way. Either they are open chain. Okay, they are a cyclic. They may be either monocyclic. They may be either bicyclic. They may be either tricyclic. Terpenes आपको मालूम है क्या होता है? C5H8. It is made up of C5H8. That is isoprene unit. Now ये तो लीनियर है. ओके, मोनोटर्पिन्स. ओके, हेमिटर्पिन, मोनोटर्पिन. ओके, हेमिटर्पिन तो मोस्टली लीनियर रहता है, बट मोनोटर्पिन, डायटर्पिन, they might be either linear, open chain, or they might be either cyclic. So if they are cyclic, cycle may be either one cyclic cycle will be there, heterocycle, and second will be, so monocyclic will be there, dicyclic, tricyclic, tetracyclic. So that classification I have not called over here. So just I am asking. So it may be either cyclic or linear chain. Okay? तो ये टर्पीन्स जो होते हैं साइक्लिक हो सकते हैं, linear chain हो सकते हैं. Now classification of terpenes. Okay, ये important पार्ट है. इसके ऊपर GPAT में क्वेश्चन आ चुका है. GPAT 2022. You check the paper. Match the following type of compound with their nature. कौन सा मोनोटर्पिन है, कौन सा डायटर्पिन है, कौन सा हेमिटर्पिन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं. So there is one exercise to you. You can make a hybrid chart of like this. ये चार्ट जो है इसका एक हाइब्रिड चार्ट बनाओ. जैसे ये तो चार्ट में ये है. इन एडिशन टू दैट आप इसमें क्या कर सकते हो? देखो, आपको इसमें क्या करना है, और आइसोप्रिन है ना, हेमिटर्पिन, मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ आइसोप्रिन यूनिट ये लिया है. उसका एग्जांपल क्या है वो भी आपको वहाँ पे डालना है. एग्जांपल ले दो. इसका एग्जांपल इन एडिशन टू दैट ये आप एग्जांपल लिख सकते हो. ये जो चार्ट है ये तो ऑलरेडी बुक में है मेरे. अभी यहाँ से आगे जो बुक आएंगे उसमें मैं एग्जांपल भी ऐड कर दूँगा. Likewise, so you have to add. So isoprene means what? Isoprene is also known as a hemitterpene. What is the molecular formula for that? Molecular formula का मतलब है C5H8. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. C5H8 is a hemitterpene. Hemitterpene, hemi means half. Hemi मतलब क्या होता है? half, है ना. अपन बोलते हैं ना हेमीसाइकिल. हेमीसाइकिल मतलब हेमीसर्कल. हेमीसर्कल मतलब क्या है? पूरा सर्कल है, आधा सर्कल. हेमिटर्पीन मीन्स आधा टर्पीन. आधा टर्पीन मतलब आइसोप्रीन. C5H8. ओके, so hemitterpine or isoprene C5H8. Now monoterpene means exactly 2 number of isoprene unit. अभी देखो isoprene unit कितना, एक ही है. मोनोटर्पीन्स मतलब क्या याद रखना है आपको? मोनोटर्पीन्स 2 isoprene unit. 2 मतलब इसका डबल करो, C10H16. नहीं तो फिर कंफ्यूज होता है आपको. आपको बोला है कि हाउ मेनी आइसोप्रीन यूनिट्स आर देयर इन मोनोटर्पीन. इसके नीचे जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है GPAT 2022. पहले आप ये देखें आइसोप्रीन क्या है? C5H8. ओके, isoprene is nothing but the C5H8. So it is known as a hemitterpene. Hemitterpene, hemitterpene. तो फिर आपको पूछा C5H8 और isoprene is also known as, आप बोलेंगे monoterpene. हो गया अगला सत्यानाश. So C5H8 is a hemitterpene or isoprene and it is a one unit. Okay. Now if there are two units of isoprene, so it is known as a monoterpene. Monoterpene में कितना होगा? मोनोटर्पीन में C10H16. C10H16, it will be a monoterpene. Now third, if there are 3 isoprene units, so it is known as a sesquiterpene. It is known as a sesquiterpene. C15H20. और इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. How many isoprene units are there in a sesquiterpene? तो आपको बाकी लोग कैसे पढ़ते कि मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, ऐसे याद रखो. लेकिन मोनो ने पूछा डायरेक्ट सिस्की मतलब आपको याद ही नहीं रहता. सो याद रखना है आपको सिस्की मतलब यहाँ पे ट्राई बोल सकते हो. सिस्की टर्पीन को आप ट्राई टर्पीन बोल सकते हैं. सॉरी, सिस्की मतलब ट्राई नहीं बोल सकते. ट्राई नीचे ऑलरेडी है. तो सिस्की टर्पीन याद रखना है आपको. पहले होता है हेमी टर्पीन. हेमी मतलब आधा, मोनो मतलब पूरा, सिस्की टर्पीन मतलब डेढ़, है ना. आधा, पूरा, डेढ़. बाद में आता है 2, बाद में आता है 3, बाद में आता है 4, बाद में 5, बाद में अनलिमिटेड. आपको ऐसे याद रखना है. आइसोप्रीन मीन्स व्हाट? C5H8. इट इज आल्सो नोन एज अ हेमिटर्पीन. मोनोटर्पीन मीन्स व्हाट? 2 unit of this isoprene, C10H16. Sesquiterpene means what? 3 units of this
कोई आइसोप्रीन उन्होंने जो C15H22 H24 और डाइटरपीन मतलब क्या है दो दो क्या आइसोप्रीन है एक आइसोप्रीन कितना होता है C5H8 दो आइसोप्रीन ओके सॉरी डाइटरपीन मींस हाउ मेनी आइसोप्रीन फोर तो देखो मोनोटर्पिन में आइसोप्रीन सॉरी आइसोप्रीन और हेमिटर्पिन में एक रहेगा मोनोटर्पिन में आइसोप्रीन में दो रहेंगे सिस्किटर्पिन में तीन रहेंगे और डाइटर्पिन में चार रहेंगे ट्राइटर्पिन में देयर आर सिक्स आइसोप्रीनिमेट आइसोप्रीनिमेट का फॉर्मूला है तो C5H8 तो अगर मोनोटर्पिन में दो है तो ऑब्वियसली C10H16 अगर सिस्किटर्पिन में तीन है तो C15H24 अगर डाइटर्पिन में फोर है तो फॉर्मूला क्या रहेगा C20H32 अगर ट्राइटर्पिन में there are six unit if there are six unit in the triaterpene what is the formula C13H48 okay so likewise that in the tetraterpene it is a 8 isoprene unit there are 8 isoprene unit in the tetraterpene क्या है mostly they are the carotenoids so vitamin A example क्या रहेगा उसका vitamin A is the example of tetraterpene क्वेश्चन आ चुका है so in the tetraterpene you are going to have 8 isoprene unit okay then pentaterpene penta means okay pentaterpene you are going to have this 10 isoprene तो आपको याद रखना है कि मोनो में कितना है मोनो में दो डाई में चार रहेगा ट्राई में छह रहेगा टेट्रा में आठ रहेगा पेंटा में 10 रहेगा मोनो में कितना है दो है ना मोनो याद रखो मोनो में देर आर इन द मोनोटर्पिन देर आर टू आइसोप्रीन सिंगल आइसोप्रीन यूनिट है तो उसको बोलेंगे हेमीटर्पिन सिंगल आइसोप्रीन हेमीटर्पिन मोनो मतलब टू आइसोप्रीन तो सिस की मतलब थ्री आइसोप्रीन उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है कंफ्यूज नहीं होना है डाइटर्पिन मींस फोर आइसोप्रीन यूनिट ट्राइटर्पिन मींस सिक्स आइसोप्रीन यूनिट टेट्राटर्पिन मींस एट आइसोप्रीन यूनिट टेट्राटर्पिन आर नोन एज कैरोटीनॉइड्स पेंटाटर्पिन विल हैव 10 आइसोप्रीन यूनिट पेंटाटर्पिन में 10 होंगे ठीक है उसके बाद में पॉलीटर्पिन को बोलेंगे अपन रबर पॉलीटर्पिन मींस रबर सो n नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है ओके दो तीन बार आ चुके हैं मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आता है तो एक कॉलम में देंगे आपको नेम ओके मोनोटर्पिन डाइटर्पिन ट्राइटर्पिन हेमीटर्पिन उसके आगे उसका फॉर्मूला देंगे या फिर उसके आगे उसके एग्जांपल देंगे एग्जांपल आपको ऐड करना है यहाँ से सब कुछ मुझे ये है मेरा तो काम है लेकिन आपका भी कुछ दायित्व बनता है यू हैव टू ऐड समथिंग ये टेबल अब हाइब्रिड टाइप का टेबल होना जैसे मैंने बोला है नेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नंबर ऑफ आइसोप्रीन ये तो हो गए और एक कॉलम ऐड करो उसमें एग्जांपल्स तो आइसोप्रीन हेमीटर्पिन का एग्जांपल मोनोटर्पिन का एग्जांपल सिस्किटर्पिन का एग्जांपल भी डाइटर्पिन का एग्जांपल ट्राइटर्पिन का एग्जांपल है ना अभी मैं तो ऐड करूंगा लेकिन आपको भी करना है आर यू गेटिंग और नॉट समझ रहा है आपको सो रिमेंबर tetraterpene means carotenoids penta and polyterpene means rubber okay sesquiterpene means three isoprene unit okay and mono means two di means four tri means six okay but remember now again volatile oils so we are going to see it again in a different slide don't worry about it volatile oil may be a different type it may be hydrocarbons for example in case of turpentine oil it is isoprene unit it may be either alcohol in case of peppermint oil, pudina, sandalwood oil, etc. Volatile oil may be either aldehydes. So, for example, Cymbopogon species, lemongrass oil, cinnamon oil, and saffron. It may be either ketone, camphor में होता है caraway, dill, jatmansi. It may be either phenol. Volatile oil may be a phenol, which is present in the clove. Clove में होता है आपका eugenol, अजवाइन. तुलसी में भी eugenol होता है. So it may be either phenolic ether. Present in the nutmeg and calamus. It may be oxides, eucalyptus, cardamom, and chinopodium oil. Eucalyptus, cardamom, chinopodium oil में oxide type of volatile oil है. इथर का आप होगा इथर, valerian, then rosemary oil, garlic, glautheria oil. We are going to see it again. तो क्वेश्चन आ चुका है जैसे मैंने बोला है आपको कि क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं. So terpenes में भी either alicyclic, acyclic मतलब क्या? लीनियर चेन एसाइक्लिक मोनोटर्पिन एग्जांपल क्या है उसके ओसिमीन एंड मैग्नीशियम पहला है आपका क्या है मोनोटर्पिन ये ऑलरेडी लास्ट ईयर में मेरे बुक में था और उसके ऊपर एज इट इज जीपेट 2021 में क्वेश्चन है तो मोनोटर्पिन उसमें इट में भी आइदर एसाइक्लिक मींस लीनियर
Example is osimine and myrcene. It may be an aldehyde monoterpene, aldehyde containing. So example is a geraniol and neral. It may be either alcoholic monoterpene. Example is geraniol and nerol. यहाँ पे L है देखो L is the for aldehyde and all P is for alcohol. So monoterpenes may be either cyclic. Okay, monoterpenes may be either acyclic monoterpene. Example क्या है उसका osimine myrcene. Aldehyde monoterpenes. Example geraniol and nerol. Alcoholic monoterpene उसमें geraniol and nerol. Then monocyclic monoterpene. अभी ये cyclic हो है. Monocyclic monoterpene. Example D-limonene, alpha terpinine, okay? Alpha terpene, beta terpinine. Monocyclic monoterpene. ये में मतलब monocyclic monoterpene containing alcohol. Example is given by alpha terpenol and menthol. Monocyclic monoterpene containing alcohol. Monocyclic monoterpene containing aldehyde. ठीक है, तो पहले क्या था एसाइक्लिक, बाद में एसाइक्लिक में एसाइक्लिक मोनोटर्पिन प्लस अल्डिहाइड कंटेनिंग मोनोटर्पिन प्लस अल्कोहल कंटेनिंग. ठीक है, अभी मोनोसाइक्लिक एक साइकिल ना, मोनोसाइक्लिक मतलब एक हेटेरोसाइक्लिक एक रिंग. मोनोसाइक्लिक मतलब वन रिंग कंटेनिंग मोनोटर्पिन. इसमें मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पिन कंटेनिंग अल्कोहल, अल्फा टर्पिनॉल, यहाँ पे ऑल हो गए, अल्फा टर्पिनॉल मेंथॉल. मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पिन कंटेनिंग अल्डिहाइड. So example is a aldehyde, perilal aldehyde. This is a phenantral, aldehyde and phenantral. Then sesquiterpene में कितना फॉर्मूला है? आइसोप्रोपेन यूनिट कितना है? There are 3 आइसोप्रोपेन यूनिट in the मोनोटर्पिन में कितना होता है? मोनोटर्पिन में 2 होता है. ठीक है, there are 2 आइसोप्रोपेन यूनिट in the मोनोटर्पिन. आइसोप्रोपेन यूनिट क्या होता है? C5H2. उसको क्या बोलेंगे अपन? हेमीटर्पिन. आइसोप्रोपेन जो है उसको क्या बोलेंगे अपन? C5H2. मोनोटर्पिन में कितना होगा? 2. इसमें 2 होगा. सेस्क्विटर्पिन में कितना होगा? 3. तो सेस्क्विटर्पिन 3 isoprene C15H is 24. So it may be either monocyclic sesquiterpene. Monocyclic sesquiterpene का एग्जांपल है जिंजीबेरिन. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. So जिंजीबेरिन is the example of sesquiterpene. क्वेश्चन आ चुका है. Monocyclic, bicyclic sesquiterpene, cadolin and santonine. These are the bicyclic sesquiterpene. इसके ऊपर GPAT 2021 में भी क्वेश्चन आ चुका है. Match the following. Diterpenes. Next one is a diterpenes. Are you able to see the screen? Diterpenes. Now in the diterpenes, how many number of isoprene units are there? Yes, anybody? Okay, 4 isoprene units are there in the diterpene. So in the diterpene, it may be either alicyclic or linear. So, for example, phytol. Okay. Then monocyclic diterpene. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. विटामिन ए इज अ मोनोसाइक्लिक डाइटरपीन. विटामिन ए जो होता है रेटिनॉल, दैट इज अ मोनोसाइक्लिक डाइटरपीन. Then bicyclic मतलब 2 ring. Okay, so manol. Okay, manol is the bicyclic diterpene. Tricyclic triterpene. Sorry, tricyclic diterpene. Diterpene है ना, 4 ही आइसोप्रोपेन यूनिट है, लेकिन साइकिल कितने हैं? रिंग कितने हैं? 3 है ना. ये साइक्लिक मतलब रिंग नहीं है, मोनो मतलब एक रिंग, बाय मतलब 2 रिंग. तो ट्राइसाइक्लिक डाइटरपीन, इसका एग्जांपल है एबियाटिक एसिड. ओके, देन पोर्नोकार्पिक एसिड, एबियाटिक एसिड एंड पोर्नोकार्पिक एसिड. ये एबियाटिक एसिड कहाँ पे होता है? ये होता है सेलोफोनी में, होता है. इसके ऊपर आज रिसेंटली क्वेश्चन आ चुका है. सो व्हेन वी विल सी सेलोफोनी, आई विल एक्सप्लेन यू एबियाटिक एसिड. सो देन ट्राइटरपीन्स. अभी ट्राइटरपीन में कितने होंगे आइसोप्रोपेन यूनिट? इसमें होंगे 6. 6 आइसोप्रोपेन यूनिट इन द ट्राइटरपीन. सो एग्जांपल पहला है एलिसाइक्लिक ट्राइटरपीन. एग्जांपल इज स्क्विलिन. Then tetracyclic triterpene. Example is the lanosterol and ergosterol. Pentacyclic triterpene. So alpha amyrin ursolic acid. तो याद रखना है आपको, इसको थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ के इम्पोर्टेंट रहे हैं. क्वेश्चन इसके ऊपर 2-3 बार आ चुके हैं. So it's you can say it's important. AIIMS it's important. Now you can see over here again. So in the monoterpenes you will have 2 isoprene units, C5H2. Number of carbon will be 10. So in the sesquiterpene 3 isoprene units are there.
number of carbons will be 15. Formula क्या होगा 15 C15 is 24. So in the display तुम्हारा are you able to see the screen? So in the diterpene, so there are four isoprene. Formula is C20 is 32. In the cis, okay, in the okay, mono cis di, okay, then ये cistraterpene. Cistraterpene is 5. Triterpene is there are 6 isoprene. Tetrarpene is okay, there are 8 isoprene. Polyterpene is there are more than 8 isoprene. More than 8 isoprene. We will see it. Now types of volatile oil. ठीक है ये volatile oil are also component of terpene because terpenoids are the present in the volatile oil. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है types of volatile oil. So example, it may be either alcohol volatile oil, it may be aldehyde, ester, hydrocarbon, ketone, oxide, phenolic ether, volatile oil. So alcohol volatile oil present in the peppermint. Peppermint मतलब क्या है? Peppermint मतलब मेंथा पिपरेट. Peppermint मेंथा पिपरेट. So peppermint, cardamom. Cardamom is your cardamom is इलायची. इलायची बोलते हो. Cardamom, coriander, then orange flower, rose oil and sandalwood oil. So all this consists of alcohol volatile oil. For example, peppermint में क्या होगा? menthol. ठीक है menthol में क्या है? alcohol रहेगा. Cardamom जो है cardamom तो इसमें क्या होगा? कार्डमम में भी यूजनॉल होता है. कोरिएंडर में क्या होता है? कोरिएंड्रॉल. कोरिएंड्रॉल. ऑरेंज फ्लावर, रोज ऑयल, सैंडलवुड ऑयल जो होता है उसमें सेंट्रल ऑयल होता है. दीज आर अल्कोहल कंटेनिंग वोलेटाइल. एल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल. सो सिनेमन. सिनेमन में होता है सिनेमाल्डेहाइड. लेमन पील, ऑरेंज पील, सिट्रोनेला. सिट्रोनेला में आपका और एक उसमें भी एल्डिहाइड होता है. लेमन ग्रास, बिटर आलमंड. इसमें क्या रहेगा? एल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल. ईस्टर वोलेटाइल ऑयल किसमें रहेगा? ग्लाउथेरिया. लवेंडर जो होता है प्लांट उसमें भी ईस्टर कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल. मस्टर्ड, रोजमेरी, गार्लिक, वेलेरियन. दे आर द एग्जांपल ऑफ ईस्टर कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल. हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल. तो टर्पेंटाइन का एग्जांपल अपने और लेते हैं. टर्पेंटाइन, ब्लैक पेपर, so they will have हाइड्रोकार्बन टाइप ऑफ वोलेटाइल ऑयल. कीटोन वोलेटाइल ऑयल किसमें होगा? देखो कैरावे, स्परमेंट, कैंपर, मस्क, स्वेट. इसमें और एक है आपका फेनल. फेनल मतलब बड़ी सोप. फेनल में एक फिनोलिक कीटोन भी होता है एंड फिनोलिक ईथर भी होता है. तो फिनोलिक कीटोन जो होता है दैट इज नोन एज फेनकोन एंड उसमें और एक ईथर जो होता है उसको बोलते हैं एनेथॉल. तो ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड. कीटोन वोलेटाइल ऑयल, कैरावे, स्परमेंट, कैंपर, मस्क, स्वेट ऑयल. Oxide volatile oil present in the chenopodium and eucalyptus. Chenopodium and eucalyptus. Phenolic ethers. Phenolic ether इसमें हो रहा है phenol में. Anethol होता है. अनीस में होता है nutmeg में. Phenol volatile oil. So clove, thymus, है ना, अजवान, clove, thyme and अजवान. Clove में होता है eugenol. Clove में होता है eugenol. So this table is again very important. In types of volatile oil आपको करना है. थोड़ा सा पास लेके नहीं तो सिलेबस बहुत ही पीछे रह जाएगा. There are different methods for extraction of volatile oil. इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आ चुका है. So there are different methods for extraction of volatile oil. So आपके जैसे आपने होता है यूकैलिप्टस लीव्स लिया है उसमें का volatile oil निकलना है. How you can isolate the volatile oil? Just by simply steam distillation. Okay. So there are different methods for extraction of volatile oil. वो बहुत सिंपल होता है. पहला मेथड है आपका हाइड्रो डिस्टिलेशन. फर्स्ट मेथड इज नथिंग बट हाइड्रो डिस्टिलेशन. हाइड्रो मींस वाटर एंड डिस्टिलेशन मींस you know that distillation means separation of two components. Okay, so hydro distillation means simply steam distillation. But for hydro distillation there is a one special apparatus used known as the Clevenger's apparatus. GPAT 2018. GPAT 2018 में क्वेश्चन आ चुका है. So Clevenger's apparatus are used in the following method. It is used in the hydro distillation or steam distillation for volatile oil. Clevenger apparatus is used like in a simple distillation. Second method होता है extraction of volatile oil, N-fluoride method. N-fluoride method. So it is a method for extraction of delicate essence or smells or perfumes. जो N-fluoride method होता है that is a delicate method. So for example, if you want to
ऑब्टेन है रोज परफ्यूम, आपको गुलाब का परफ्यूम आइसोलेट करना है. If you want to extract essence of rose essence or smell of rose, so what you have to do, you have to make a trace. बहुत सारे ट्रे लेना है, उसमें क्या करना है, okay? उसमें you have to spread a fat उसके ऊपर स्प्रे करना है. You have to prepare a fatty layer in the tray, and you have to then you have to separate the petals of your rose flower. You have to keep that petals on the that fatty layer. So what will happen, so as this essence, ये जो volatile oil होता है इसमें, so it will imbibe in the fatty layer. ये वो फैट में चला जाएगा, because फैट क्या है, लिपिड है. ये भी volatile oil क्या होता है, they are soluble in the lipid, so लिपिड में जाके imbibe हो जाएगा, imbibe में अंदर जाएगा. So you have to repeat this process 2-3 times, and once that fatty layer is saturated, you have to take out that fatty layer, and you have to extract that with the alcohol. तो फैट अलग होगा और essence plus alcohol होगा. Then you can obtain by distillation. So used for the extraction of delicate perfume, flower petals are spread on a fatty layer and allowed to imbibe. Okay? Then extracted with the liquid solvent. Then extracted with the liquid solvent. So this is the second method. Are you getting or not? समझ रहे हैं आपको? Then third method is nothing but the equally method. Equally method. Now this method is used for the extraction of oil present in the citrus fruit. तो citrus fruit होता है, उसमें का जो oil है, उसके लिए ये citrus fruit का जो oil होता है, for example orange जो होता है, oranges, lemon. Okay. So if you want to isolate the lemon oil, if you want to isolate the orange oil, so that for that purpose this method is used. What happens in this method? इसमें भी दो टाइप का मेथड होता है. So I have only given one. डिटेल में अगर देखना है आपको, there are two methods in this nuclear method. So first जो होता है brushing method होता है, sponge method होता है, sponge रहता है इसमें. इसमें क्या करना है आपको, so you have to isolate the peel. आपने जो peel लिया है ऑरेंज का छिलका, उसको वाटर में भिगोना है. You have to soak in the water, and then you have to remove the debris, and then you have to place that peel on a sponge. स्पंज के सामने उसको प्रेस करना है, so that volatile oil present in the glands, okay, so that will be absorbed by sponge, and after saturation of sponge you can go and squeeze over there at another place, and you can obtain that oil. Okay, that is one method. Second method is nothing but there is a particular type of instrument which has a different type of rupturing element. जैसे पिन होंगे उसमें, so that pin ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहेगा, इसमें सिर्फ छिलका डालना है, आपको घुमाना है. What will happen? The pins will rupture the glands present in the peel of orange peel or lemon peel, etc., and you will get a volatile. Okay? So used for the extraction of citrus oil, the cells are ruptured by mechanically, by eruption, by twisting the material or clockwise direction. Okay. Now third method होता है liquid carbon dioxide method. It is a solvent extraction method. It is a solvent extraction method. Okay. So it is again used for the extraction of essential oil, and solvent used is nothing but the liquid carbon dioxide. Okay. So that's it. There are three methods for extraction of volatile oil. You have to remember. Okay. Now chemical test for volatile oil. Question इसके ऊपर आ चुका है GPAT में. There are two tests for detection of volatile oil. Chemical test for volatile oil. So first test, आपको जो भी टेस्ट है ना उसमें याद रखना है. So this dye. इसके ऊपर एसिड है. So TS of drug, then alcoholic solution of Sudan 3, that is a dye Sudan 3. You will get a red color with the oil globules. Okay. So if volatile oil is present, so it will get red color due to Sudan red. Okay. And TS will appear a red color. Remember, this is the specific test. Sudan red का dye जो होता है alcoholic solution of Sudan red, so that will stain red colored globules. Oil globules will be appear as a red colored globules. तो ऑयल ग्लोबुल्स होंगे आपके इसमें लीव में या फिर आपके पिल में या फिर आपके जो भी फ्रूट है उसमें, इट विल अपीयर एज रेड कलर, सुदान रेड. इंपॉर्टेंट. देन अनदर टेस्ट इज टीएस ऑफ योर ड्रग, a drop of tincture of alkana. Tincture of alkana लेना है, you will get again a red color.
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल. So ये दो टेस्ट है, इसके इम्पोर्टेंट टेस्ट है. Now again, occurrence of terpenoid. Terpenoid का occurrence कहाँ पे? So where they are present? Which kind of families of drug will have terpenoids? So you can see over here, terpenoids they are present in the volatile oil. Okay, terpenoids present in. So they are present in the carabe oil. So terpenoid carbon and limonene. Carbon, limonene is the terpenoid. In the citronella oil में कौन सा है terpenoid? Geraniol, citronellal, फर्नेसॉल. यूकेलिप्टस ऑयल में कौन सा है? सिनेऑल. जेरानियम ऑयल में क्या है? जेरानियोल. पेपरमिंट ऑयल में क्या है? मेंथोल. दैट इज अ टर्पनॉइड. ओके. जिंजर ऑयल जो है क्या है? वोलेटाइल ऑयल है. इसमें कौन सा टर्पनॉइड है? जिंजिबेरॉल. फेनल के जो ऑयल है वो क्या है? वोलेटाइल ऑयल है. इसमें क्या होता है? एनेथॉल. एनेथॉल क्या है? सैंडलवुड ऑयल जो है उसमें सेंटेनॉल होता है. क्लोव ऑयल जो होता है उसमें यूजेनॉल होता है. So different oils or different solitary oil from plant and respective terpenoid present. So we'll see remaining topics, remaining points tomorrow. बाद में कल अपन एक एक टिप देखेंगे. ठीक है, समझ में आया? अच्छी अलग समझ लगा थोड़ा ना? समजलं का? येस और नो? ओके. थोडंसं आता स्लोली घेऊया, कारण एक तास घेतो मी आता. तर ते दुसऱ्या बॅचचं पण थोडंसं कव्हर अप करायचं मला.